Yo, what's up, guys? We are back with another part of this movie that you guys voted for. So this is TAARE ZAMEEN Par. And check this out. 31% of you are subscribed, so thank you so much. But 68% of you still need to subscribe. Click that button, guys. Like this video, and let's go. Morning, sir. Nikom, come in, come in. सर मुझे एक स्टूडेंट के बारे में बात करनी थी। ईशान अवस्थी 3rd D, नया स्टूडेंट है। I know. दूसरे टीचर्स की भी कंप्लेंट आ गई है। बैठो। 3rd D. हमें नहीं लगता कि वो साल भर भी टिक पाएगा। नहीं सर, वो बड़ा अक्लमंद बच्चा है। उसे बस रीडिंग राइटिंग की थोड़ी तकलीफ है। आप तो जानते होंगे डिसलेक्सिया के बारे में। हाँ? I see. हाँ, यस सर। तुमने तो हमारा काम आसान कर दिया निकुम। सोच रहे थे कि उसके फादर से क्या कहेंगे। बच्चा ट्रस्टीज के थ्रू है, यू सी। गुड। तो फिर स्पेशल स्कूल ही सही जगह उसके लिए, क्यों? नो सर, I mean, ही इज अ चाइल्ड विद अबव एवरेज इंटेलिजेंस। उसे पूरा हक है एक नॉर्मल स्कूल में रहने का। उसे बस जरा सी yeah. मदद चाहिए हमसे। और वैसे भी दुनिया भर में हर किस्म के बच्चे, चाहे जो भी उनका प्रॉब्लम हो, एक साथ नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं। बल्कि मेरे ट्यूलिप्स के बच्चों को पूरा अधिकार है किसी भी साधारण स्कूल में पढ़ने का। माफ कीजिएगा सर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे भारत देश का कानून कहता है। सर्व शिक्षण अभियान के अंतर्गत हर बच्चे को यह अधिकार मिलता है। ये और बात है कि बहुत कम स्कूल हैं जो इस कानून को फॉलो कर रहे हैं। He looks like a reasonable man, but it feels like he lost his patience. Guys, as you know, I am very connected to this movie as a teacher and as a student. I saw him say something that reminded me. He said 3rd D. So D reminded me of my class. I don't know if this is the same in India, but where I studied, there were different classes. There were class A, B, C, D. And they were categorized as A were all the whites. Yeah. If you know anything about Africa, then you know, well, especially South Africa, apartheid, segregation. So the class A was for all whites and some merit students. Class B was a mix. Whites, coloreds, what they call coloreds are like light-skinned, right? Class C was a mix. Whites, coloreds, or actually no whites in class C. It was just coloreds and darker skinned students that would have a good grade. And class D were all the rejects. And guess where I was? I was in class D. But you might ask, wait, but you're fair skinned. And I'm like, okay, but I'm a foreigner. That's one thing. I'm Latino, if you consider Brazilians Latino. And second of all, I also went into the school in the middle of the semester because I had just recently moved into the country, Namibia. So I was put in the rejects, and my scores weren't that good. I told you I wasn't a good student. So the segregation was horrible, and I was in 7D, grade 7D, and honestly, it was the best experience I had. And I think that's why I'm enjoying this movie so much, because I can relate to it. And I wanted to talk about this when I watched Chichori. When I watched Chichori, I told you guys I would tell you the story, right? If you remember when when SSR, RIP, rest in peace, when he was selected for the losers for the section 63 something, 63D, something like that. I said, is it 63D? I can't remember what section he was put in, but it was the losers, right? I told you, oh, I'm gonna tell you the story, and I did right now. So that's why I liked the movie Chichori, Master. Also, there was a school of all boys and rejects, let's say. I liked Kirik Party also.
you know, all of these movies, they reminded me of a little bit of my childhood, but this movie, TAARE ZAMEEN Par, is what reminded me most of my history, both as a student and as a teacher. So hey, I'm sharing a little bit of my story, and I hope you guys appreciate it. देखो, तुम मुझे एक बात बताओ, ये बच्चा यहाँ कैसे मैनेज कर पाएगा? मैथ्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, लैंग्वेज। सर कर लेगा सर, टीचर्स जरा सा हाथ बटा दे, हो सकता है। कहाँ है टाइम टीचर्स के पास? 40 बच्चों के बीच एक बच्चे पर ध्यान देना। 40. Come on, Nico. It's impossible. सर जितना आप सोच रहे हैं इतना टाइम नहीं लगेगा। In my classroom we had 45 children, and there were only 2 whites, me and one other guy, and he was very his scores were very like below average, and that's why he was there with us. But he was a rugby player, so you know, he used to hang out with the white kids, and I can't remember having one white friend growing up. हफ्ते में 2-3 घंटे बस मैं करके दिखाता हूँ, और वैसे भी इन सारे सब्जेक्ट्स में तो उसको सिर्फ पास होना है, उसकी असली मंजिल तो कहीं और है सर। अच्छा, तो आपका सब्जेक्ट छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट जो हम पढ़ाते हैं बेतुके हैं? नहीं सर, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हर बच्चे का अपना हुनर होता है। Yeah. And as Oscar Wilde says, who wants a cynic who knows the price of everything and the value of nothing? Nice सर quote. प्लीज सर, सर जरा बच्चे की पेंटिंग देखिए, ये देखिए सर, Show him the boat, the airplane. ये जंग का मैदान, सिपाही सुरंग खोदता है और खोदते खोदते पन्ना पलटकर सुरंग में से उड़न छू। क्या सोच है सर, ये कॉन्फिडेंट ब्रश स्ट्रोक्स, सच बोल्ड यूज ऑफ कलर, बेधड़क। और ये देखिए सर, अनोखा फ्लिप बुक, घर से बिछड़ जाने की दास्तान। I believe this reminded me of a quote also, that I don't know who it was, but the quote goes like this: if you tell a fish, or if you judge a fish by its ability to run a mile, it will spend his whole life thinking he's dumb and useless. So never judge anyone on something they don't know, right? So this kid, Ishan, he has a very creative talent, and he can reach wonders. क्या सोच है सर, महज 8 साल के बच्चे की बनाई हुई। सर पटरी से हटकर बहुत कम लोग सोच पाते हैं। सर प्लीज सर, एक चांस, उसे एक मौके की जरूरत है, वरना उसकी उम्मीद टूट जाएगी सर। Indeed. तुम चाहते क्या हो मुझसे? सर कुछ वक्त तक उसकी स्पेलिंग्स, उसकी लिखावट को नजरअंदाज किया जाए, उसके टेस्ट जबानी लिए जाए। ज्ञान तो Okay, ज्ञान होता है good. सर, चाहे वो जबानी हो या लिखित। उतने में मैं उसकी लिखाई पढ़ाई पे काम कर ही रहा हूँ, धीरे धीरे वो भी सुधर जाएगी। That's a good strategy. टेम्पररी टीचर की बातों में आकर Oh, डैमेज ना कर बैठे। wow. That was a burn. But there's no permanent damage. You're opening a special section of the school for tutoring and taking care of bright students like Ishan. That's good. That's good endo marketing for your school. In fact, people will see that you have a program for special students. Amazing. That's nice. And he's using the English written. How is he gonna do for Hindi? Mat. Mate. That's nice.
big enough to sail our boats. एक कुएं में रहता था It looks like he's in prison. Oh, he's learning Hindi now. दादी में Mighty nice. Very good. अब 3 जोड़ो. I hope this temporary teacher is, Very you know, good. अभी इसमें 5 being जोड़ो. valued. कहाँ पहुँचे? Very good. अभी 11 कम करो. Oh, that is nice. Nice strategy. Henny Penny. They set off to a nose between each pair of eyes. Noses, noses, every size. कोयल है चिड़ियों की रानी, कभी सुनी है उसकी वाणी? Oh, Pac-Man, but a generic version. Gotta avoid copyright. Sinbad was dazzled by Oh, multicolored lights his handwriting is better than mine. and chocolate. No way. That looks beautiful. Beautiful handwriting. Oh, this is from the poster, isn't it? I think I saw the poster or the thumbnail. Van Gogh or Van Gogh. I don't know if that's the right सर एक pronunciation. सवाल था, आपने स्कूल पास करने के बाद कभी पेंटिंग की है? What? Such a nice director. Painting competition. Teachers, students, सबके लिए. I want all of you to come, okay? No, seriously. कला का मकसद क्या है? अपने अंदर छिपे जज्बातों को छूट देना. आज खुश हो, हाथ ऑटोमेटिकली ब्राइट कलर्स की तरफ बढ़ते हैं. लंच बकवास था, सारे काले गर्दूले रंग पेपर पर निकलते हैं. Excuse me. मिस्टर अवस्थी, आइए प्लीज कम. दोस्तों मैं जरा 2 मिनट आया. आइए. बैठिए. Give them an activity. Don't leave the kids like that. Never leave the kids unattended like that. Give them something to be busy with. फैक्ट्री के काम से आया था. ईशान से मिले? नहीं अभी नहीं, मिलूंगा. पहले आपसे कुछ बात करनी थी. Oh, this is where it drops. I think he's gonna remove Ishan from the school because, you know, in storytelling in movies, you need to have a good, nice climb, and then it has to drop so that you can reach the climax and everything. So it's a good bad situation. So something's gonna happen. He's gonna pull Ishan out of the school, I think. मेरी वाइफ काफी दिनों से इंटरनेट सर्फिंग कर रही है. Special इस school. लक्ष्य पे छपी सारी जानकारी उसने पढ़ डाली है. आपको बताना था. क्यों? मुझे क्यों बताना था? नहीं, कहीं आप ये सोच के ना बैठे हो कि हम उन लोगों में से हैं जो अपने बच्चों का ख्याल नहीं करते. Okay. ख्याल करना बहुत जरूरी है मिस्टर अवस्थी. इसमें इलाज की शक्ति है. एक मरहम है जिससे दर्द मिटता है. बच्चे को तसल्ली हो जाती है कि उसका कोई ख्याल करता है. Nice. एक आध झप्पी, प्यार भरी पप्पी, ये दिखाने को कि मैं ख्याल करता हूँ. Okay, we're gonna go to the next part. The dad is realizing he hasn't spent much father-son time with his son, so I'll see you in the next part, guys.